The role of development aid in gender development. Talking about gender and development, women empowerment and development, we often come across a term called development aid. We need to understand what development aid is. Development aid can be defined as aid given by governmental and other agencies to support the economic, social, and political development of developing countries. It may be given by developed countries and or developing countries. यानी ऐसी एड या ऐसी माली इमदाद जो कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को या उसी मुल्क के इदारे दूसरे इदारों को देते हैं ताकि वो फलाही काम सर अंजाम दे सकें. Development aid is also known as development cooperation, development assistance, international aid, also foreign aid, international assistance, and also in terms of technical assistance. The primary goal of development aid is basically poverty alleviation. That is to control poverty and to reduce poverty in the countries and in the societies for which the aid is meant. The goal of women development, empowerment, and gender equity are also connected with poverty and poverty alleviation in many ways. So we see that when we talk about poverty alleviation, that involves gender development and empowerment of women. Attaining gender equity in various spheres of life, keeping in mind the global goals, is a huge task which requires solid and sustained financing. So when we talk about poverty alleviation and we talk about women empowerment and we talk about gender equity, we see that all of these things need financial support, financial assistance, and a strong, regular flow of income so that the projects meant for welfare and empowerment can be carried out. So we see for that purpose we need aid. The agenda of development, poverty alleviation, and women empowerment requires input and support from all quarters concerned. The government, the implementing agencies, the civil society, and all other possible stakeholders. तो जब हम ये बात करते हैं कि माशरे में औरतों की एम्पावरमेंट होनी चाहिए, माशरे में तरक्की होनी चाहिए, गुर्बत का ख़ात्मा होना चाहिए, तालीम आम होनी चाहिए, सेहत बहुत अच्छी होनी चाहिए और सेहत की सहूलियात सबको फराहम होनी चाहिए और दस्तयाब होनी चाहिए, तो हम देखते हैं कि इसमें कोई एक इदारा सिर्फ इस काम को सरअंजाम नहीं दे सकता. हुकूमत के इदारे, गैर सरकारी तंजीमें, सिविल सोसाइटी, ये सब के सब लोग और सब के सब इदारे इसमें अपना किरदार अदा करते हैं. So at times internal resources are not enough and we need support from the external sources, and this is where development aid is required and is used. हम जानते हैं कि हमारे बाज़-औक़ात ज़राए इतने काफ़ी नहीं होते कि हम अपने इलाके के या अपनी जगह के या अपने मुल्क के मसाइल को खुद ही हल कर लें. उस सूरत में हमें बैरूनी इमदाद की ज़रूरत हो सकती है. हो सकता है आप किसी छोटे इदारे में काम करते हो और आपको एक बड़े इदारे से मदद की ज़रूरत हो. आप एक छोटे शहर में रहते हो और आपको एक बड़े शहर से इमदाद हासिल हो जाए, या एक गैर तरक्की याफ्ता मुल्क में रहते हो और आपको एक तरक्की पजीर मुल्क या तरक्की याफ्ता मुल्क से इमदाद हासिल हो जाए ताकि आप तालीम को और सेहत को बेहतर बना सकें. Development aid can be of two types, bilateral aid and multilateral aid. Bilateral aid means when only the donor country and the recipient country are involved in a direct transaction. That is, the transaction takes place the donor and the recipient, यानी दो ममालिक के दरमियान ये जो है अमल तय पाता है. Multilateral aid, when the donor country gives the aid to some international organization, for example WHO or UN Women, who disperse it to the recipient countries or the receivers. यानी जो इमदाद है एक तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा हो और बड़े पैमाने पर हो, तो उसको जो इदारा ये इमदाद दे रहा है या जो मुल्क की इमदाद दे रहा है वो बराह रास्त दूसरे मुल्क में जाकर ये तकसीम नहीं करता. उसको वो आम तौर पर किसी बड़े बैनुल अक़वामी इदारे
جیسے کہ اقوام متحدہ کا کوئی ادارہ ہو، یا ہم دیکھتے ہیں کہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اسی قسم کا ایک ادارہ ہے، ان کو وہ امداد دی جاتی ہے، وہ پھر جہاں کہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر اس کو تقسیم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. Developed and developed countries have been playing a significant role in women empowerment by providing funding for strengthening different aspects of empowerment. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کے امپاورمنٹ یا ویمن امپاورمنٹ کے لیے بہت سے ممالک اور بہت سی بین الاقوامی تنظیموں نے اپنا اہم کردار ادا کیا ہے، جس کی وجہ سے کم ترقی یافتہ یا غیر ترقی یافتہ ممالک میں بھی عورتوں کی فلاح و بہبود کے بہت سے کام سر انجام دیے جا سکے.